Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Alia Wahid and you are on the channel of Medicare. So welcome back. We are going to start the practicals of microbiology. So in the previous lecture we have discussed the experiment number 2, and which is about the microscope, and we have also discussed the microscope information in the practical of pharmacognosy. So and now we are going to start the next experiment, which is experiment number 3, and this experiment is about the introductions to the microbiology laboratory equipments. So as we have discussed the laboratory equipments in the pharmacology first experiment, and in that experiment we have discussed all the instruments that used in the lab of pharmacology. But in this experiment we are going to start the instruments that are used in the lab of microbiology. So here are the instruments which are used. So first of all, the microbiology lab is a place where all the microbiological tests are performed and analysis of these tests is occurring. Various instruments which are given, which are used in the microbiology lab are given below. So there is all the instruments that are used in microbiology lab. So the first instrument is microscope, which we have discussed in the previous experiment. Next instruments are autoclave, incubator, laminar airflow, hot air oven, and water bath. So these instruments we are going to discuss the explanation, their components, their diagram. We will explain how to use them. We will discuss all the things in that lecture. So you should watch this video till the last end, and if you like it, then don't forget to subscribe to this channel and also press the like button so that you can get the information about the upcoming experiments. So the first instrument that used is autoclave. So autoclave is a pressurized chamber used for the process of sterilization and disinfectant. You know what is sterilization? Sterilization is a process by which we are killing the microbes. So you know that in our environment a lot of microbes, a lot of germs are present, so we have to kill them. So for the process by which we can kill these microorganisms which are present on the non-living objects, this process is called as sterilization, and disinfectants means the same, that we are going to kill the microbes present on the non-living things. So what are the non-living things? Like the surgical instrument, the medical instrument which are used in the surgical process. So we don't want that on any surgical instrument any kind of microbe is present, because if they present then they can transmit the diseases into the human body. So therefore we should sterilize them, we should purify them from all the microbes. So for do that we use the autoclave. It is a pressurized chamber. So here I have drawn the diagram of autoclave. As you can see, this is a chamber, or this is a pressurized chamber in which the pressure is exerted. So this is a pressurized vessel which you can see a lot of pressure controlling devices are present in it, which are controlling the pressure in it. So actually what we do, actually we put all the instrument which should be sterilized, we put all these instrument here in this perforated basket, and then we will set the optimum temperature with this thermometer. We remove the air by this valve. We control the pressure according to the medical instrument which put into it. Okay, so every instrument need different pressure, and then we also have at the bottom of it, this is the water. Okay, and the heating element is present here. So this heating element heat the water vapors will raise it up, and a steam is present. So all over here the pressure is exerted by the steam. So due to this pressurized steam or at the high temperature, we kill all these microorganisms. You know that these microorganisms cannot bear such a high pressure or such a high temperature. So the changes occur in their cells and they will die. So in that way we kill the microbes in the autoclave. So
I have explained how to use it. If lid is present, you will put the first of all, the first step of this autoclave to use it, you will load it. You will put all the instruments which should be sterilized into it. After that, you will close that lid, and then after that, you will give this autoclave the optimum conditions for the temperature, for the pressure, for all the things. And after that, you will close the lid, and then the process is started out. All the microbes are killed by the pressurized steam, and then after that you have to cool it, and then you have to open it, and then all the instruments are ready to use. So next, let's move on to the next page. Okay guys, so now we are going to discuss the working principle of autoclave, that on which principle it is going to work. So that's very important, because the steam is used to sterilize the apparatus at very high temperature, which is 125, and in some books it is written 121, so you can write any of them, and for 15 to 20 minutes. So you should record, or you should keep the temperatures values in your mind. So the time and the temperature depend on the material which is being sterilized inside the autoclave. Its principle is the moist heat sterilization, as moist heat sterilization is a type of sterilization. We have studied the topic of sterilization, and in which we have classified it into several groups, and we have divided that sterilization can be done with heat and without heat. And the heat sterilization is again divided into the two types. One is the moist heat sterilization, other is the dry heat sterilization. So the autoclave work on the principle of moist heat sterilization. So that is very important concept, you should note it. So what are the uses of autoclave? It is being used for the medical or laboratory equipments or the surgical instrument to being sterilize them and to clean them. It also used to prepare the culture media in the lab, in the pharmaceutical industries, in the food industries. You know, in the food industry, we prepare the food without any kind of microbes. So the food containers should be sterilized, because they don't we cannot afford any kind of microbe present inside the food container, so that we should sterilize them. In the pharmaceutical industry, a lot of medicines are produced, and the container of all of these medicines are cleaned or sterilized by the autoclave. Next, this information is not written, I am just explaining it orally. So if you want to write it, then definitely you should write that. I am going to explain the components of autoclave. So autoclave is first of all, it consists of a component which is called as a chamber, very huge chamber. Pressurized chamber is given here, and this chamber is made up of stainless steel. Next component is a steam generator, is present inside it, which is by heating the water by a heating element, we produce that steam. So next component of autoclave is the pressure or temperature controlling devices are also present inside the autoclave. So the next instrument which is being used in the microbiology lab, and this instrument is called as incubator. So what is incubator? Here the diagram of incubator is drawn. So it is this box shaped container. When you open it, it consists of three shelves on it, and we will put any kind of material onto it. And what is its function? Let's study that. So incubator is a device that is used in the laboratory for the growth or maintenance of microorganisms. So if you want to culture media of the bacteria, so you will put it into the incubator. If you want the culture media of viruses inside the chicks eggs, then you can definitely put them into the incubator, and then you will see it. So it is actually going to provide the optimum conditions for these microorganisms. So after getting the optimum condition, these microorganisms begin to grow, and then we can give them. And after these microorganism growth, we perform several experiments on them. We study their characteristics, their properties, so that we can efficiently produce the drugs against them. So that's why incubator is very important medical instrument, especially in the microbiology lab.
So it provides the optimum temperature, optimum pressure, optimum moisture, so that every microorganism can get growth. So the pressure or the temperature, it depends upon the microorganism. Like if you are using the bacteria, it has different temperature, different pressure, it needs different moisture conditions. If you are using a fungi, it has different optimum conditions. So you should give optimum condition, and after that the growth, you can see the growth of it. So on this incubator, a lot of temperature and pressure controlling valves are available on it. You can control it from that side. So the components of incubator is written here. It composed of a chamber, as you can see here in the diagram. It has a chamber here. It has a temperature controlling system, humidity controlling system, air circulating controlling system, and a gas controlling system. All of these systems are present inside it. So now let's discuss the working principle of the incubator. So the working principle of incubator is given here, that it is based on the principle of maintaining proper atmosphere or condition to grow the specific microorganism. Incubator has a temperature system to maintain the temperature and according to the organism needs. So it also allows to adjust the concentration of carbon dioxide and pH. Definitely the concentration of pH and the concentration of carbon dioxide is affecting the growth of microorganisms. So you should set all of these conditions, and after that you can see their growth. Uses of incubator are has a wide range of application, including the cell culture, pharmaceutical studies, and biochemical study. Especially in biotechnology, you are studying the effects and the uses of microorganisms. In the pharmaceutical study, it also used because we are going to prepare a lot of antibiotics through the bacteria, through the fungi. So they are very important, and their growth is very important. So incubator is used for that purpose. So the next instrument that is being used in the microbiology lab, and this instrument is called as Laminar air flow cabinet. It shortly it explained with the LAF. Okay, LAF, laminar air flow and cabinet. So here is the diagram of the laminar airflow. You can clearly see it. This diagram is very difficult to draw, but if you can draw it, then definitely you should add this diagram into your practical copy. So here you can see it consists of the chamber, and what is its function. Let's discuss that. So laminar airflow, it controls the airflow system, airflow. So air is flown in it, and it controls the air inside this cabinet. So how laminar hood is a closed device. Okay, so ये पूरी closed device है. इसके आगे यहाँ पर glass होता है. Closed device है primarily for the processes of microbial transfer or the instrument sensitive to the microbial contamination. अब मैं इसको आपको उर्दू में समझाती हूँ कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, या जिनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या माइक्रोब से कंटेमिनेट हो सकते हैं. सो अगर कोई ऐसा प्रोसेस आप कर रहे हैं, या कोई ऐसा सेलुलर कल्चर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इस तरह के ख़तरात हैं या कुछ चांसेस हैं, तो आप उसको लेमिनार एयर फ्लो में रखेंगे. इस तरह ये होता है कि वो माइक्रोब्स की कंटेमिनेशन नहीं होती, क्योंकि इसका एयर फ्लो इस तरह का होता है. तो ये क्या है, हमने इसमें भी क्या करना है, क्रिएट अ स्टेरिलाइज्ड एनवायरनमेंट फॉर द प्रोसेस. कि कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो हम ऐसे ही आम से इन्वायरमेंट में नहीं कर सकते, क्योंकि उनके कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं. हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है कि जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो और साथ हमें वो ऑप्टिमम कंडीशन भी मिले. जैसे अब इंक्यूबेटर है ना, तो इंक्यूबेटर में तो ये है कि आपने काफ़ी दिनों के लिए एक चीज़ छोड़ के रख देनी है, ठीक है, खुद नहीं जाना आपने, उसको बंद रखना है, ठीक है. लेकिन लेमिनार फ्लो कैबिनेट ये है कि आप साथ साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साथ साथ वो चल रहा होगा और ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा होगा. तो ये चीज़ आ जाती है लेमिनार एयर फ्लो का काम, कि ये आपको स्टेरिलाइज्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि कोई माइक्रोब का ट्रांसफ़र ना हो, एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट तक माइक्रोब ना जा सके. सो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, लेमिनार एयर फ्लो इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील. तो ये सारा जो आप देख रहे हैं ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है. इट क्रिएट द स्टेरिलाइज्ड एनवायरनमेंट
विद द फ्लो ऑफ एयर। सो ये एयर इसमें से इतनी तेज़ी से पास करती है कि वो किसी भी माइक्रोब को ग्रो नहीं करने देती। So the next is that it also it has a lot of filters in it. So it is filtering the air. HEPA filters are very important, which are fixed in the laminar airflow, and these filters are filter the air. So it extract out all the microbes present in the air, because these filter size is 0.3 micron. इन फिल्टर्स के जो पोर्स होते हैं ना, उनका साइज़ बताया हुआ है 0.3 माइक्रोन। सो इतना छोटा साइज़ है कि माइक्रोब्स या कोई भी बैक्टीरिया इस पोर के साइज़ से नहीं गुजरता, जिसकी वजह से प्योर एयर जो है वो उस लेमिनार एयर फ्लो के अंदर चल रही होती है, और वो बिल्कुल आपके इंस्ट्रूमेंट को हर तरह के माइक्रोब से प्रोटेक्ट रखता है। लेमिनार एयर फ्लो टर्न्स ऑन द 15 मिनट बिफोर टू इंश्योर द कम्प्लेक्स स्टेरिलाइजेशन। तो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के 15 मिनट्स पहले आप उसे चला के रखेंगे। इट शुड बी क्लीन होना चाहिए विद एथेनॉल बिफोर एंड आफ्टर यूज़। तो अगर आपने यूज़ करना है तो पहले भी उसको एथेनॉल से क्लीन करें, यूज़ करने के बाद भी उसे क्लीन करें, क्योंकि उसकी क्लीननेस बहुत ज़रूरी है। Uses the laminar hood is used to conduct the processes that are sensitive to the contamination. All the things are repeated down, and it also used for the plant tissue culturing. Next instrument is the hot air oven. Oh, one thing I have forgotten, that the components of laminar airflow, it consists of first the working area, a container you can say. Then the second component is the HEPA filters. I have explained it to you. It also consists of a fan, or you can say a blower. Okay, so blower or a fan, it produces the air. It maintains the very uniform flow of air in it, and the air flow direction is two. Like the one air flow direction is in the horizontal way. Okay, so air passes through the horizontal way, and the next air flow direction is the vertical way. So लेमिनार फ्लो के अंदर इस तरह भी एयर पास कर रही होती है, इस तरह भी एयर पास कर रही होती है, ताकि जो आपका इंस्ट्रूमेंट बीच में पड़ा है वो बिल्कुल क्लीन रह सके, ताकि स्टेरिलाइज एनवायरनमेंट हो। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आ जाता है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन, इसका नाम ही बता रहा है कि ये ड्राई हीट हम स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन कर रहा था, और वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? येस, यू आर राइट, Autoclave is an instrument that works on the principle of moist heat sterilization. और ये जो आपको hot air oven है, it works on the principle of dry air sterilization. अब जारी बात है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हमने ड्राई रखना होता है, उनके कांटेक्ट में हम मॉइस्ट को नहीं ला सकते हैं। ठीक है, कुछ ड्राई मटेरियल्स ऐसे होते हैं, कुछ ड्राई पाउडर्स होते हैं, अगर उनका कांटेक्ट में मॉइस्चर आ गया या स्टीम आ गई तो वो तो डिग्रेड हो जाएंगे। सो ऐसी चीज़ों के लिए हम हॉट एयर ओवन को यूज़ करते हैं। सो अ हॉट एयर ओवन इज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट यूज टू स्टेरिलाइजेशन ऑफ द मेडिकल इक्विपमेंट बाय यूजिंग ड्राई हीट। सो जस्ट हम हीट यहाँ पर उस इंस्ट्रूमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई स्टीम नहीं प्रोवाइड कर रहे। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन विच परफॉर्म ऑन द ड्राई मटीरियल्स ऑन द हीट रेजिस्टेंस मटीरियल लाइक ग्लासवेयर्स। तो जितने भी आपके ग्लासवेयर्स हैं ना, उनके ऊपर हम हाई प्रेशराइज स्टीम नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि अगर हम हाई प्रेशराइज स्टीम उनके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो फट जाएंगे। ये ग्लास इतना ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो ऐसी मटेरियल्स को, ऐसे हीट रेजिस्टेंस मटेरियल को हम फिर स्टेरिलाइज करने के लिए हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप हॉट एयर ओवन की डायग्राम देख सकते हैं। ये इसका लिड है, ये इस तरह से क्लोज हो जाता है। ऊपर इसका थर्मोमीटर, डबल वॉल इंसुलेटेड ये चैम्बर होता है, मतलब दो वॉल से इंसुलेट हुआ हुआ है। ट्रे फॉर द सैम्पल्स, ये पोर्स वाली ट्रे आप देख रहे हैं, ये 3 ट्रेस हैं, और टाइमर यहाँ पर लगा हुआ होता है, और डिफरेंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस यहाँ पर अटैच होती हैं जिनसे आप इसको कंट्रोल करते हैं। सो इसमें आप अपना मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या जो भी ग्लासवेयर है वो आप पुट करते हैं, लिड को क्लोज करते हैं, यहाँ से सेटिंग्स करते हैं, और उसके बाद ये आपको हॉट एयर ओवन जो है वो आपको स्टेरिलाइज जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो आपको दे देता है। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज़ टाइप्स ऑफ हॉट एयर ओवन। सो हॉट एयर ओवन की कुछ टाइप्स भी हैं। ठीक है, सबसे पहले हॉट एयर ओवन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फोर्स्ड हॉट एयर ओवन एंड स्टैटिक एयर हॉट ओवन या हॉट एयर ओवन। फोर्स्ड हॉट एयर ओवन कौन से हैं? द हीटेड
air inside the oven is distributed throughout the oven with a fan. तो इस वाले हॉट एयर ओवन के अंदर दो टाइप्स के ओवन हैं. एक के अंदर फ़ैन लगा हुआ होता है और वो फ़ैन जो हीटेड एयर होती है, गर्म हवा होती है, उसको पूरा अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है. मतलब मैंने पीछे जो आपको डायग्राम दिखाई थी, इसके अंदर क्या होगा, एक फ़ैन लगा हुआ होगा जो इसके अंदर जितनी भी हवा है उसको अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. बट जब हम बात करते हैं ना इसकी स्टैटिक एयर ओवन की, अच्छा, इसमें इट प्रिवेंट्स द रेजिंग हॉट एयर्स टुवर्ड द टॉप्स बाय कीपिंग द कोल्ड एयर एट द बॉटम. से ये चीज़ होती है ना कि जितनी भी गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है और जो ठंडी हवा होती है वो नीचे, वो भारी होती है, वो नीचे की तरफ बैठ जाती है. तो ये ओवन के अंदर ये चीज़ नहीं होने देता. देखें, अगर कोल्ड एयर नीचे की तरफ बैठ जाएगी तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो आपने ज़रा नीचे वाली ट्रे पे रखे होंगे वो तो स्टेरलाइज होंगे ही नहीं. तो इस वजह से इस फ़ैन का होना ज़रूरी है. जो दूसरी टाइप का ओवन है स्टैटिक एयर ओवन, इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ओवन हीट प्रोड्यूस बाय द कॉइल्स. तो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कॉइल्स से होती है. अब कॉइल्स से ना ये जो कॉइल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एट द बॉटम और फ़ैन नहीं होता है इस ओवन के अंदर. सो अब क्या होगा, यानी सिर्फ हीटेड जो एयर है वो सिर्फ नीचे नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं होगी, ठीक है, या ऊपर जाएगी तो नीचे नहीं रहेगी. मतलब इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है यूनिफॉर्म. जिस तरह उसके अंदर फ़ैन था तो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी ना एयर, यहाँ पर क्योंकि फ़ैन नहीं है तो वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी अच्छी तरह से. एक जगह ज़्यादा अगर हीटेड एयर है तो एक जगह बहुत कम होगी. तो इस वजह से जो हॉट एयर राइजेस एंड डजंट अलाउ द इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन, तो इफेक्टिव इसकी स्टेरिलाइजेशन नहीं हो पाती. यूजेस क्या है, यूज टू स्टेरिलाइज द मटेरियल्स. So let's discuss the components of hot air oven. So it consists of a timer on it. It consists of a chamber, as you have seen in the diagram. It consists of a heating source and the temperature controlling system. So the last thing is that it allows the destruction of microorganisms as well as the bacterial spores which are present on the instruments. And now we have completed the processes of hot air oven. The next instrument and the last instrument is the water bath. That is very important and especially it's used in a lot of experiments. So what it is actually a convenient device that is used for the chemical reactions that require a controlled environment at a constant temperature. यानी कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए होता है. लाइक अगर वो चाहते हैं कि 60 डिग्रीज टेम्परेचर रहे तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए हम ये वाटर बाथ यूज़ करते हैं. ये आप इसकी पिक्चर दे सकते हैं. इसमें ये नेट से ये होती हैं, इनको हम उठाते हैं, जितना भी आपको साइज़ चाहिए होता है इसके अंदर हम वाटर पुट करते हैं, इसे टेम्परेचर सेट करते हैं. तो वो पहले पानी जो है वो गर्म होता है और पानी जब गर्म होता है तो वो हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ लगता है और उस इंस्ट्रूमेंट या ग्लासवेयर के अंदर जो भी हमारे केमिकल्स पड़े हुए होते हैं वो गर्म होते हैं और फिर वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, अ सेंसर डिवाइस ट्रांसफर द टेम्परेचर बाय वाटर. यानी इसके अंदर थर्मोस्टेट एक डिवाइस होती है जो पहले गर्म करती है वाटर को और फिर वाटर के ज़रिए से हीट ट्रांसफ़र होती है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर और उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर फिर जो केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहा होता है. देयर इज़ अ कंट्रोल और हीट सिस्टम विच हीटेड द वाटर टू डिज़ायर टेम्परेचर. तो वो एक कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो टेम्परेचर को कांस्टेंट ही रखता है. अगर 60 डिग्री टेम्परेचर चाहिए तो वो उसको कांस्टेंट ही रखेगा. यूजेस क्या है, दे आर यूज फॉर द इग्निशन पर्पज़. यानी किसी चीज़ को जब जलाना होता है ना तो हम उसके लिए वाटर बाथ वगैरह को यूज़ करते हैं. हम बंसर बर्नर भी यूज़ कर सकते हैं बट कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनको हम डायरेक्टली बंसर बर्नर पे नहीं रख सकते. और दूसरा बंसर बर्नर पे इसलिए भी नहीं रख सकते क्योंकि बंसर बर्नर एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं प्रोवाइड कर सकता है. सो अगर आपकी कंडीशन है उस केमिकल रिएक्शन के लिए कि आपने कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करना है देन आप वाटर बाथ को यूज़ कर सकते हैं. सो हम लोगों ने यहाँ पर ये सारे इंस्ट्रूमेंट कर लिया है कवर. हम लोगों ने देखा ऑटोक्लेव क्या होता है, मॉइस्ट शीट स्टेरिलाइजेशन के लिए काम आता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसकी यूजेस क्या हैं, what are the working principle of it. We have discussed everything about it. Then we have discussed the incubator, we have discussed the laminar airflow, hot air oven, and lastly we have discussed the water bath.
सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे इंस्ट्रूमेंट और इनकी वर्किंग, इनकी प्रिंसिपल्स और इनके यूजेस सब कुछ और इनकी डायग्राम वगैरह इन सब चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ज़रूर मत भूलिएगा, ताकि आप नेक्स्ट आने वाले एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरेटिकल वीडियोस को देख सकें। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।